friends, hi everybody. Welcome to the very session. My name is Preksha Sharma, your English educator at Unacademy, and I welcome you all to this very particular session wherein we are going to deal with the important questions, and that's for your good, for your own practice. So kindly stay tuned and please make sure that you're attending the entire class so that you all are listening to everything like in one go and you all are going ahead with the best for yourselves as well. Okay, this is going to be one of the very important sessions. So please give me a confirmation in the comment section that you all can see me well and you all can hear me well, because that is like one of the very important things. Like if you all can hear me and see me well, then we are gonna go ahead with the session. Okay, so guys, please make sure that you guys are always attending the sessions wherever I come up with the important questions, because आपके ही अच्छे के लिए होता है ये. Okay, all right, and this is also very helpful in understanding that how we go ahead with our sessions. I mean, how we go ahead with our practice. Okay, so in order to keep a check on that, all right, please make sure you all are going ahead with it. Okay. So everybody, I welcome you all once again. A very good afternoon, everyone. I hope everybody is doing like super great and the things are going fine with everyone. So now I would like to tell you all, I mean, of course, you guys know my name. My name is Preksha Sharma, आपकी English educator, and I've been guiding a lot of you for the past few years to be like really good in the communication skills and to score good marks in academics. And I am pretty sure that you guys have been like following me dedicatedly, and all the classes that you have been attending. Okay, that is like very important as well. Okay, so please keep an eye on everything that you have to do. Okay, alrighty, people. तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वी आर गोना डू. ओके, प्लीज़ मेक श्योर बेटा कि आपने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए. अगर आपने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज़ चैप्टर्स को पे ध्यान दो, चैप्टर्स की रीडिंग करो. मैंने आपको ये बोला है जितने भी हमारे फैक्चुअल चैप्टर्स हैं, ठीक है, उनकी रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो यू कैन नॉट टेक दैट लाइटली, कीप दैट इन योर माइंड. ओके, प्लीज़ डू मेक दिस श्योर that everything that you are studying, that is making sense to you, and everything that you are doing, all right, is done in a way that you remember it. It should leave an imprint on your mind. It should not be like a direct kind of like cramming, or you're trying to just do some ratta thing. I mean, that is a cramming thing only. Don't do that. That's not welcoming. Okay, so please try your level best that you are giving your best shot in understanding everything in detail, and that too in such a way that if any question, because I have told this many a times, like any question can be asked in your examination. मतलब आपका किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो किसी भी वर्ड को लेके पूछा जा सकता है या किसी भी फ्रेज को लेके पूछा जा सकता है. तो आपको अपने एग्जाम में ये सारी चीजें नहीं करनी है. उसके लिए आपको ये बात बहुत दिमाग में रखना पड़ेगा कि आप चैप्टर के हर एक वर्ड से एकदम रूबरू हो. दैट मीन्स कि आपको बहुत अच्छे से पता हो कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है. जितने भी वर्ड्स हमारे उसमें दे रखे हैं, सबके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो मेक श्योर कि आपको सबके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स पता है, क्योंकि अगर कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स पता है तो आपकी लाइफ ईजी रहेगी. कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स नहीं पता है तो बहुत डिफिकल्ट वाली सिचुएशन हो जाती है. सो डोंट लेट दैट हैपन एंड मेक श्योर दैट यू आर जस्ट गोइंग अहेड विद इट in the correct manner. All right, it's like pretty an important thing that I'm mentioning to all of you right here for your own good. हाय श्रद्धा बेटा, उसका सेशन आपका आ रहा है, कल आएगा वो सेशन, ठीक है, 2 बजे ये वाला सेशन. कल नहीं, कल नहीं आ रहा ये सेशन. ये सेशन आपका आएगा 26 को, ठीक है. द ट्रीज से रिलेटेड, द फॉग, ऑल राइट, ये सब चीजें, टेल ऑफ कास्टर द ड्रैगन, ओके, ये सब चीजें आ रही है. शिव द चैप्टर्स, वी आर ऑलमोस्ट डन विद ऑल द चैप्टर्स. आई डोंट नो व्हाट चैप्टर एग्जैक्टली आर यू टॉकिंग अबाउट, बट whatever is being left, you will be getting a session for that in this very particular month only. Don't be worried about it, you can check that out. All right, ओके. चलिए आगे चलते हैं. अब हम हमारे क्वेश्चंस करेंगे जो थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है. मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है. मैं पहले ही आपको ये चीज़ें क्लियर करवा देती हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें. मैं ये बात आपको रिपीट करवाऊंगी ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के सेशंस में, जिससे कि आपका जो सब्जेक्टिव राइटिंग है वो पॉलिश हो सके. ओके, आपको यू हैव टू राइट द रिफाइंड आंसर, द आंसर्स विच आर लाइक वेरी प्रेजेंटेबल, द आंसर्स विच आर लाइक वेरी गुड, द आंसर्स विच आर रियली गुड. Okay, the book that saved the earth, I think we are done with that. All right. Or if you are not a plus, I mean, in the plus classes, we have covered all that. But yeah, if the chapter hasn't been covered yet, I am going to take care of that. Don't be worried about it. Okay. So all the important questions are going to be taken consideration. First, the thing is consistency. Okay.
टेंस की कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, यानी कि आपको टेंस की कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है क्वेश्चंस में भी और आंसर्स में भी, यानी कि जो आपके क्वेश्चन का टेंस है वही आपके आंसर का भी टेंस होना चाहिए. सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड. इट हैज टू बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट. ऑल राइट, मैंने आप लोग को ये बात बता रखी है कि कभी कभी जैसे हमारा कोई इन्फॉर्मेशन है जो ऑलरेडी पास फॉर्म में दे रखी है, क्वेश्चन आपको एक प्रेजेंट टेंस में दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन का अब आंसर जो है आपको उसे वो प्रेजेंट टेंस में ही लिखना है, ठीक है, लेकिन अगर वो आंसर आई मीन अगर उसमें आप पास्ट टेंस में आंसर दे रहे हो तो वो वहां पे आप पास्ट टेंस में आंसर इसलिए दोगे क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन जो बुक में दे रखी है ना वो पास्ट टेंस. समझ आ रही है बात मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ? नो प्रॉब्लम. हाय खुशी, हेलो, हाय एवरीबॉडी. ओके, समझ आई बात कि एक जो क्वेश्चन है जिसका आंसर प्रेजेंट आई मीन जिसका क्वेश्चन आपको प्रेजेंट टेंस में दे रखा है उसका आंसर आप पास्ट में तभी लिख रहे होगे तब जब आपका क्या कहते हैं वो इंफॉर्मेशन आपकी बुक में पास में ही दे रखी हो, तब हम उसको उस तरीके से लिखेंगे, ठीक है. दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका पंक्चुएशन. पंक्चुएशन को लाइटली नहीं लेना है. अगर आप एक पीरियड यूज कर रहे हो यानी फुल स्टॉप, एक कॉमा, एक इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, या आप सेमी कोलन या कोलन यूज कर रहे हो, एवरीथिंग हैज इट्स ओन वैल्यू, ठीक है. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जैसे कि अगर मैंने आप किसी को कोट कर रहे हो, यानी कि हम किसी के डायरेक्ट वर्ड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी को कोट कर रहे हो, किसी के डायरेक्ट वर्ड्स हैं, तो वहां पे आप उसको डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हो, लेकिन आप कोई अगर इन्फॉर्मेशन, अगर इस केस में जैसे किसी के डायरेक्ट वर्ड्स हैं उसको आपने डबल में ना लिख के सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा तो वो तो पहली चीज वो गलत हो जाएगी, ठीक है, वो गलत हो गया है आपका. तो वहां पे उसको रूल आपको पता आना चाहिए और वो आपकी सिर्फ प्रैक्टिस से आता है बेटा. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए ही अच्छा है. और जो हमारा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आता है ना, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास हमारे आते हैं जब मैं कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ, ठीक है. अगर मैंने कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ले ली है बुक से और उसको मैं अपनी नोटबुक में लिख रही हूँ तो वहां पर आई विल से दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द पंक्चुएशन. However, if I am talking about something which has been written in double inverted commas, okay, that is like something that has been spoken by somebody. Okay, is that making sense to everybody? All right. Then the third point जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा important है वो है बेटा vocabulary, ठीक है, vocabulary और आपकी spelling, ये दोनों चीज़ें ना बहुत important है. आप अपना जो vocab वाला पार्ट, जो spelling वाला पार्ट है वो बहुत strong रखो. अगर आप incorrect spellings लिखते हो अपने examination में so every teacher is supposed to deduct the mark, because actually you are like dealing with the language, and language is all about the spellings, the grammatical aspects and the punctuations. ठीक है, all right. खुशी, नो, आई डोंट थिंक दैट्स हैपनिंग, ठीक है, मतलब आपको यू हैव टू रिलाई टोटली ऑन योर सीबीएसई सैम्पल पेपर. जैसा कि सीबीएसई सैम्पल पेपर ने प्रोवाइड किया है, सो वी आर गोइंग टू टोटली बिलीव व्हाट इज बीइंग प्रोवाइडेड. यू वी आर नॉट गोइंग टू जस्ट डिसाइड थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग. ओके, सो जस्ट रिलाई ऑन द पेपर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाय ईरा, हेलो, हाय नूब, हाय. ओके, सो अपना वोकैबुलरी स्ट्रांग रखो. स्पेलिंग्स में अगर मिस्टेक करोगे तो आंसर कटेगा. बहुत सारे बच्चे ऐसे कह रहे हैं मैम मैंने पूरा एप्ट आंसर लिखा है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, मैंने वर्ड लिमिट भी अच्छी लिखी, सब कुछ बढ़िया लिखा, लेकिन टीचर ने मेरे मार्क्स काट लिए. बेटा मार्क्स इसलिए काट लिए क्योंकि आपके नहीं, या तो टेंस इनकंसिस्टेंसी होगी, टेंस में कोई गड़बड़ होगी, या स्पेलिंग स्पेलिंग का जो मार्क का मिस्टेक है वो कहीं पे भी स्पेयर नहीं होता है, ठीक है, आपके वहां पे मार्क्स कटेंगे. फिर नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू ऑल इज द वर्ड लिमिट, ठीक है. दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. वर्ड लिमिट को आप इग्नोर नहीं कर सकते बेटा. आपको अगर दे दिया कि फॉर 3 मार्क्स के क्वेश्चन में कि 40 to 45 वर्ड्स हैं तो यू हैव टू स्टिक टू इट, ठीक है. आपको इसको मतलब यू हैव टू बी वेरी श्योर कि वो आप ठीक ठीक तरीके से कंसिडर कर रहे हो, ठीक है. 40 to 45 क्या कहते हैं आपका वर्ड लिमिट, यू हैव टू मीट इट, यू कैन नॉट टेक इट लाइटली. क्यों? क्योंकि अगर आप अपने आंसर्स को एग्जैजरेट करते हो उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बट आपको मार्क्स भी नहीं मिलते हैं. क्यों? क्योंकि आपने सब कुछ लिख दिया होता है विच इज नॉट डिमांडेड. कभी भी किसी भी एग्जाम में, हाय ईरा, हेलो डियर, कभी भी किसी एग्जाम में आपको वर्ड लिमिट आई मीन किसी भी लैंग्वेज में, चाहे फ्रेंच से डील कर रहे हो, हिंदी या फिर इंग्लिश, स्पेनिश, उसमें आपको अगर वर्ड लिमिट स्पेसिफाई की है इसका मतलब कि उस क्वेश्चन का आंसर हम उतने वर्ड लिमिट में दे सकते हैं. नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू राइट द थिंग इन दैट पर्टिकुलर लिमिट, ठीक है. ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आपको उतने लिमिट में आंसर देना है.
All right, is that clear? And my English is not so good, so I do. Beta Sushma, if that is the issue, do not spam first thing. Okay, the second thing is that if you think that your English is not that good, then speak as well as practice. ठीक है, क्योंकि आप बोलोगे, आप गलती करोगे, शायद आसपास आपके ऐसे लोग होंगे जो आपको ठीक कर देंगे। अगर आपको लगता है कि आसपास मुझे इतना ज़्यादा सोर्सेज नहीं मिल रहे हुआ करेक्टिंग मी, तो अब ना जो ग्रामर है ना उसको स्ट्रॉन्ग करो पहले। आपका ग्रामर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इंग्लिश किसी की भी तभी वीक होती है जब आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग नहीं होती। एंड फॉर मेकिंग योर ग्रामर सो स्ट्रॉन्ग यू हैव टू बी लाइक लिटरली वर्किंग हार्ड एट इट। अपने रूल्स को सारे क्लियर करो, दिमाग में ये बात रखो कि आपको सारे रूल्स आने चाहिए। रूल्स की लिस्ट बना के अपने सामने रखो, उसको आते जाते रीड करो, ठीक है। आई एम नॉट आस्किंग यू टू क्रैम इट, क्रैमिंग इंग्लिश इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ डीलिंग विद इट, okay, that is not the absolute right way, so you're not doing that, okay, keep it in your mind. Hi Pankaj, a very good afternoon. And then practice harder. All right, the more you're gonna practice, you'll be becoming good at it. All you need to do is you need to do certain extra efforts. आपके वो क्या क्या कहते हैं, आपके जब थोड़े से वेकेशंस आते हैं, अभी आई थिंक आपके विंटर वेकेशंस आने वाले होंगे, तो ट्राई टू डू समथिंग अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव बीन डूइंग सो फार. जस्ट लिसन टू पीपल हुज नेटिव लैंग्वेज इज इंग्लिश. Read the English newspapers, read English magazines, or read a novel. There are a lot of words that are there in a novel. Make a list of all of them. Just look at the kinds of sentences that are being used. See in what situation which tense has been used. You'll start noting all these things. So that's gonna be helpful. ओके, नहीं नहीं शिवदत्त, नहीं बेटा, इंग्लिश के एग्जाम में ये बात मैंने पहले भी बता रखी है, कभी भी पैरा में नहीं लिखना, सॉरी कभी भी पॉइंट्स में नहीं लिखना है, हमेशा पैराफ्रेज करना है आपको अपने आंसर को। बोथ में तो डेफिनेटली पॉइंट्स में नहीं लिखना है, यू वोंट बी गिवन द मार्क्स इन दैट केस। ऑलवेज पैराफ्रेज योर आंसर. All right, 74 on 80 in my English paper during Haveli. That's pretty a good score. However, try your level best to maintain that. I mean, to just fill that gap of 6 marks as well. And please try to find out that where did you lose those 6 marks. Okay, that's like very important to know. If you'll come to know about it, you'll start working at it. Okay, oh cool. तो वर्ड लिमिट हमेशा मेंटेन करो बेटा, ठीक है। अपने आंसर्स ब्रीफ रखो। अगर आपका आंसर 3 मार्क का है, कीप इट ब्रीफ, ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं जाना। आई होप यू हैव टेकन अ नोट ऑफ इट, आई एम जस्ट इरेजिंग इट। तो वर्ड लिमिट में 3 मार्क्स का है तो आप उसको 40 to 45 वर्ड लिमिट में लिख रहे हो। 6 मार्क्स का है तो आप उसको कितने में लिख रहे हो, लाइक जो भी वर्ड लिमिट दे रखी है 100 to 120 वर्ड्स। So that is how you need to go ahead with it, and that is how it's gonna be helpful for you in a long run. So please make sure that you are keeping an eye on all these things in the right way and you're helping yourself out with it. Okay, it's like a very important point. And then, like I have told you about I have told you about the fact that you have to maintain the spelling, you have to maintain the tense consistency, the punctuation, and this vocab and the spelling thing and the word limit. So all these things should be kept in your mind while you're writing an answer. Okay, and please always take a minute, 1 minute to think what you are writing and then write. Okay, this is like one of the important things that I am telling you. First thing is that take a minute to write and then write it. That's gonna be helpful for you. Okay. बिकॉज आपके दिमाग में अचानक से कुछ भी आता है, आप लिखना स्टार्ट कर देते हो, आपको पता ही नहीं चलता है कि आप वर्ड लिमिट पे क्रॉस कर चुके हो और आप कुछ भी लिख रहे हो। आप मेरे को वो आंसर प्रोवाइड करो जो मुझे चाहिए। आप अगर एग्जैजरेट करते जाओगे तो वो मेरे लिए किसी काम का आंसर नहीं है। तो डोंट डू दैट, ओके, दैट्स ऑल नॉट एट ऑल लाइक नीडेड। नाउ द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एवरीबडी। The very first question, what did the postmaster do after reading the letter? Okay, it's one of the important questions. All right, a 3 marker question. All right, what is the name of the chapter? If you can tell me in the comment section, क्या है नाम chapter का? What is the name of the chapter, everybody? In the comment section, do let me know, please. Quite an easy one, right? Not that difficult. Tell me the name of the chapter, guys. What exactly, according to you, is going to be the name? I mean, is the name of the chapter? Is not going to be a letter to God. Absolutely correct. Very good, Shivdat. Okay, G has to be capital. Please keep this in your mind. Okay. Letter बेटा दशील ध्यान से लिखा करो। मैंने हमेशा बोला है जो टाइटल है किसी भी चैप्टर का, किसी भी पोम का, आपको वो उसी तरीके से याद होना चाहिए जिस तरीके से उसे बनाया गया है। इट्स इम्पोर्टेंट, ठीक है। जिस तरीके से उसे बनाया गया है उसी को याद रखो। इट रियली डज मैटर। अ लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड, ठीक है।
तो नाउ अब ये टेंस देखेंगे हम, डिड द पोस्ट मास्टर डू, पास्ट टेंस है, मुझे पता चल गया मेरे को अब क्या करना है, टेंस कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। तो अब मैं उसी हिसाब से अपने क्या कहते हैं आंसर्स को लिखने वाली हूँ। द पोस्ट मास्टर लव व्हेन ही रेड, ठीक है, क्या पढ़ा उसने, लेंचो का लेटर, बट सून ही बिकेम, फिर जल्दी ही वो सीरियस हो गया था, एंड वॉज मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड। He did not want to shake Lencho's faith, so he decided to collect money and send it to Lencho on behalf of God. That's what he had done. Alright, it's a 3 marker thing. I have directly given the information. मैं कुछ extra नहीं provide करूँगी. एक्स्ट्रा प्रोवाइड करने से पहले तो मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही होती हूँ, क्योंकि मुझे रीडिंग सेक्शन में दिमाग लगा के सोचना होता है। एक लिटरेचर ही ऐसा सेक्शन होता है जो आपने पढ़ा हुआ होता है, जो आप घर से पढ़ के जाते हो, ठीक है, और वहां पे जाके आप उसके आंसर्स लिख सकते हो, यू नो अबाउट इट, यू नो एटलीस्ट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट, राइट? So, like literature section is the one that you should be attempting first, and then you should be saving time also by writing the right answers. ठीक है, तो दिमाग लगाना है, टाइम को सेव करना है, so what you have to do is, all right Ishita, so what you have to do is कि आपको basically क्या करना है, आपको सही तरीके से लिखना है। सारे में मैंने आपने देखा है कि मैंने वर्ब को मेंटेन रखा है, आई हैव मेंटेन द वर्ब वेल। ओके, नाउ वी आर मूविंग अहेड। Did Lencho try to find out who had sent the money to him, why or why not? क्या लेंचो ने ये क्या कहते हैं ढूंढने की कोशिश की थी कि उसको पैसे किसने भेजे थे, क्यों या क्यों नहीं? तो ये वाला क्वेश्चन एक तरीके से आप लगा लो, एक तरीके से लेंचो का कैरेक्टर एनालिसिस में काम आता है। ऑल राइट, इससे हमें क्या पता चलता है, लाइक उसकी इस वाली चीज से कि लेंचो ने कुछ कोशिश ही नहीं की थी कुछ भी फाइंड करने के लिए कि उसको पैसे किसने भेजे थे। तो ये वाला क्वेश्चन इज समथिंग लाइक विच हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग लाइक व्हाई डिडंट ही इवन गिव, लाइक व्हाई डिडंट ही इवन थिंक अबाउट इट, कि उसने सोचा भी क्यों नहीं था। ऑल राइट, आई हैव टू गो टू, ओके आई गॉट दैट, हे काव्यांश, हाय डियर, एंड आई लाइक दैट दिस नेम, गुड। So Lencho did not try to find out who had sent the money to him because he never suspected the presence of God. Suspected का क्या मतलब होता है? Doubted. ठीक है, अब आपने देखा कि पास्ट टेंस में दे रखा है, डिड ही दे रखा है, सस्पेक्टेड दे रखा है, ही कुड नॉट बिलीव दे रखा है, हिज फेथ इन गॉड वाज सो स्ट्रॉन्ग दे रखा है। तो ये आप बोलोगे कि लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम बिकॉज ही नेवर सस्पेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। उसको भगवान में पूरा भरोसा था, उसने कभी भी भगवान पर क्या कहते हैं शक या फिर मतलब अविश्वास जताया ही नहीं था। उसको ये यकीन ही नहीं, वो ये यकीन ही नहीं कर सकता था that it could be anybody else other than him who would send him the money. All right, his faith in God was so strong that he believed that he had sent money to him for his help in his problem. What do we come to know about him in this case? We come to know that he had no faith in humanity. Okay, like he is basically a representation, like he is representing the faith in he is representing the faith in humans. All right, he is representing the faith in God, okay, the unshakable faith. However, the postmaster and the post office employees, they are representing the faith, they are the representatives of humanity, like the humanity still exists. All right, but we see that Lencho, he was a very naive person, quite innocent, very simple, and he did not think anything else apart from getting the help from God. He was this simple and this straightforward. All right, is that clear, everyone? ठीक है, सीधा सीधा आंसर लिखो, ज्यादा घुमा फिरा के 3 मार्क्स शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में तो ज्यादा कहानी लिखनी ही नहीं है हमें। ठीक है, आप सीधा सीधा वही दो जो जरूरत है, यू हैव टू डायरेक्टली सप्लाई व्हाट इज नीडेड। if you are providing the answers more than what is being asked, my dear, you're gonna lose marks, and we do not have any scope of losing marks this time, right? We cannot really afford it. Alrighty, hey Drishti, hi dear. Now making a move ahead, how did Lencho's prediction about rain come true? उसने जो prediction की थी वो कैसे सच हो गई? Lencho had looked towards the northeast and remarked that they would get some water, and his prediction came true when it started raining in the evening. तो इस तरीके से उसकी जो prediction थी वो सच हो गई, and this is a 3 marker thing. Alrighty. Now
Why did लेंचो say the raindrops were like new coins? ठीक है, लेंचो ने ऐसा क्यों बोला था कि जो raindrops थे वो new coins की तरह थे? लेंचो said that the raindrops were like new coins. It was because the raindrops could cause a good harvest. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसने क्यों बोला था कि ये नए सिक्कों की तरह? उसके पीछे का रीजन क्या था? वो रीजन ही हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो कॉइन्स हैं वो रेफर कर रहे थे किस चीज को? वो ये बता रहे थे कि जो रेन ड्रॉप्स है ना उससे एक अच्छी हार्वेस्ट होगी, जिससे जो उसकी फील्ड को जरूरत है उससे उनको एक अच्छा क्रॉप मिलेगा, और फिर क्या कहते हैं उस क्रॉप को बेच के ऑफ कोर्स दे कैन हैव मनी। ऑलराइट, और वो जो रेन ड्रॉप्स थे उनकी जो ब्राइटनेस थी वो नए कॉइन्स की तरह थी। दैट इज व्हाट वी आर हियर टॉकिंग अबाउट। So Lencho said that the raindrops were like a new coin, sorry, like new coins. It was because the raindrops could cause a good harvest, okay, that his field needed most. Thus, he would get a rich crop. Further, the raindrops had a brightness like new coins. Okay, that's what you have to write. And this is the right answer that you need to go ahead with in your like 3 marker question. Okay. Next, what were Lencho's feelings when the hail stopped? Okay, hail basically क्या represent करता है? Hailstorm. Alright, when the hail stopped, Lencho's soul was filled with sadness. अब आप यहाँ पे क्या देखोगे? देखो, जो मैं ज्यादातर वर्ड्स ना वो इनकॉर्पोरेट और फ्रेजेस में वो इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करती हूँ जो हमें ऑलरेडी बुक में दे रखे हैं। क्यों? क्योंकि उससे आपका जो आंसर है ना वो थोड़ा सा रिप्रेजेंटेबल होता है। आई मीन दैट बिकम्स लाइक क्वाइट वर्दी। जैसे यहाँ पे बोला लेंचोस ऑल राइट सोल, ऑल राइट वॉज फिल्ड विद सैडनेस। तो लेंचो की जो सोल थी वो सैडनेस से भर गई थी। ठीक है, वो दुख से भर गया था। ही वॉज वेरी मच ट्रबल्ड, वो बहुत ही ज्यादा ट्रबल में था। ट्रबल्ड मतलब दैट ही वॉज वेरी मच सैड। एंड हिज ऑल राइट कॉर्न, his corn was totally destroyed. He said the hail has left nothing. देखो अब मैंने यहाँ पे कोट किया है डायरेक्ट, मैंने पंक्चुएशन सही लगाई, ही सेड के बाद मैंने कॉमा लगाया। आपने रिपोर्टेड स्पीच में ऐसा देखा है ना कि जब भी हम क्या कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड क्लॉज लिखते हैं, ही सेड वाला जहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रिलेशन होता है वो रिपोर्टिंग क्लॉज होता है। उसके बाद जो हम लिखते हैं वो रिपोर्टेड क्लॉज लिखते हैं। सो रिपोर्टिंग क्लॉज के बाद मैंने लगाया कॉमा, देन इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। ठीक है, फिर आता है फुल स्टॉप, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, वी विल गो हंग्री। तो मैंने डायरेक्टली उसे क्या कर लिया, कोट कर लिया, देन फुल स्टॉप, पहले आएगा फुल स्टॉप एंड देन योर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो दैट इज हाउ यू आर गोना राइट। इट्स अ 3 मार्कर क्वेश्चन कि उसकी फीलिंग्स क्या थी। अब मैंने डायरेक्टली कॉन्टेक्चुअल फ्रेज यूज किया है, जो मैंने आपको बोला था ना कि कॉन्टेक्चुअल वर्ड्स, हाँ ये मेरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये नोट करो। हमेशा ट्राई टू यूज कॉन्टेक्चुअल वर्ड्स। ठीक है, ज्यादा नो फैंसी वर्ड्स प्लीज। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही एग्जॉटिक सा लिख दो जिसका मतलब आपको पता नहीं है और कुछ समझ में आ नहीं रहा है। ठीक है, सो यू आर नॉट गोना गो अहेड दैट वे, दैट्स नॉट वेलकमिंग एट ऑल। तो कॉन्टेक्चुअल वर्ड्स लिखो, कोई भी फैंसी वर्ड्स नहीं लिखने हैं। तो व्हाट वर लेंचोस फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप? सो व्हेन द हेल स्टॉप, लेंचो की जो सोल थी वो दुख से भर गई थी। वो बहुत ही ज्यादा परेशान था, उसका कॉर्न पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया था, हेल ने कुछ नहीं छोड़ा था। दिस ईयर, उसने कहा कि इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं होगा, हम सब लोग भूखे मरेंगे। दैट इज व्हाट ही सेड। ऑल राइट, हाँ हर्षित बेटा मिल जाएगा, डायरेक्ट आंसर लिखना है, कोई दिक्कत नहीं होती है, मिल जाता है। देखो 3 मार्क्स का बेसिक आइडिया इज योर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, और उसमें आपको क्या करना है, आपको एग्जैजरेट नहीं करना है। इन्होंने सिर्फ पूछा है कि फीलिंग्स क्या थी, बुक में यही दे रखा है जो मैंने आपको दिया है, इससे ऊपर ना इससे नीचे कुछ नहीं लिखना है। यू आर गुड टू गो फॉर दिस। Alright, you'll get the marks. Don't just go with this conception in your mind कि मैंने तो बस 4 लाइनें लिखी है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। 4 लाइनें is enough for your 3 mark question. आपको अगर 6, 7, 8, 10 लाइनें लिखनी है उसको हम बड़ लॉन्ग आंसर में कन्वर्ट कर लेते हैं। That is not needed. ठीक है, Now, what was Lencho's pride and possession? ये बहुत important question है। ठीक है, again this is something which talks about the character of Lencho कि उसका pride क्या था, उसका possession क्या था। तो Lencho lived in the solitary house। जो Lencho था वो एक solitary मतलब like एक alone, एक अकेले घर में वो रहता था। कहाँ रहता था? On the crest of a low hill in the valley। ठीक है, घाटी के मतलब low hill पे रहता था, crest पे, okay, top of a low hill valley में। वहां से ही कुड सर्वे, वो देख सकता था, ही कुड सर्वे दैट मीन्स वो देख सकता था द रिवर एंड हिज प्राइड, मतलब वो रिवर देख सकता था और उसका प्राइड क्या था? उसका प्राइड था
गुरूर आप समझ लो उसका क्या था, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर। यहाँ पे आप देखोगे आई हैव यूज द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, सो दैट्स लाइक एन इम्पॉर्टेंट थिंग, like he was the pride of the field of ripe corn which was dotted with flowers. These always promised a good harvest. ये हमेशा एक अच्छा harvest ही promise करते थे. Their only wish was a downpour. ठीक है, उनकी सिर्फ इच्छा क्या थी कि एक downpour हो जाए. All right. Downpour refers to rain. Okay, and Lencho, who knew his fields intimately. Intimately का क्या मतलब होता है? Closely. ठीक है. Predicted. उसने बोला था कि बारिश होगी. His prediction turned true. उसकी prediction जो थी वो बिल्कुल सच हुई when it started raining during dinner. जब क्या कहते हैं उनके supper timing पे. All right. ओके बारिश होने लगी. ही वेंट आउट टू फील द रेन. वो बाहर गया बारिश को महसूस करने के लिए और उसने पूरा देखा इधर उधर with satisfaction. There is that term and the phrase in your book which says that he regarded the fields, all right, and there was a sense of satisfaction in him. So regarding the fields is like that he was surveying them, he was just looking at everything. So his crop draped in a curtain of rain. So उसके जो crop था वो पूरा draped था in a curtain of rain. पूरा ऐसे बारिश हुई हुई थी. He regarded raindrops as a new silver coins. उसने new raindrops को कैसे regard किया? As a new silver coin. That's it. That's what you have to go ahead with. Could see the bleak future of his family. Yeah, Raghav, that is an absolute right thing. We are gonna like deal with like 4 to 5 chapters. That's what we're gonna do. Okay. So now we are switching to the next chapter, which is Nelson Mandela, The Long Walk to Freedom. So in this also we have got some of the questions which are like very important. Okay. So what ideals did Mandela set out for the future of South Africa in his speech? So this is like one of the important things. बेटा मैं ये बात आपको फिर से आपको बता देती हूँ. If you have not considered it so far, you still have time. You still have time to be a little more serious about it. Nelson Mandela, The Long Walk to Freedom. The next chapter, Anne Frank, that is from the diary of Anne Frank. These are the chapters which are based on the actual things. I mean, they are not fictional, they are real. So whatever information is being provided in them, please make sure you're taking it like seriously serious. You have to like understand every word which is being given in it. Also, this is a like a Nelson Mandela Long Walk to Freedom is actually a historical chapter wherein like in this excerpt we are like precisely dealing with the speech of Nelson Mandela. Okay, that too on the day of inauguration ceremony. So we have taken this particular chapter from his biography, which is Long Walk to Freedom. So since like all the facts that are being given, they have got their own importance, and like we are the excerpt has been taken from a source, so we cannot distort any information. If you're being asked any question, that is like very important. I'll be coming in another session, Harshit, for all the RTCs. Okay, that'll be a total different session wherein I'll be dealing with just the RTCs. All right. तो गाइज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल टू ऑल ऑफ यू इज कि इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ लो. अगर अभी तक भी नहीं पढ़ा, आपको लगता है मुझे इसमें स्कोर नहीं हो रहा है, मुझे इसमें मार्क्स कट रहे हैं, मुझे इसके आंसर्स नहीं अच्छे से आ रहे हैं, मैं फिर से कह रही हूँ प्लीज इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ो. आपके लिए ये जरूरी हो चुका है ऑनेस्टली थिंक. ठीक है. तो मंडेला इसमें क्या है, मंडेला सेट आउट द आइडल्स फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका बिकॉज ही हैड डीप फीलिंग्स फॉर हिज कंट्री एंड कंट्रीमैन. ही प्लेज्ड टू लिबरेट ऑल द पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, डेप्रिवेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन. अब मैं आपको एक बात बताती हूँ. मैंने आपको बोला है ना कि हमारे जितने भी 3 मार्कर्स होते हैं उनको हमें डायरेक्ट आंसर देना होता है. ठीक है, टू द पॉइंट आंसर दोगे ना आप, ब्रीफ आंसर दोगे, राइट, एकदम टू द पॉइंट आंसर दोगे. ठीक है. लेकिन यहाँ पे अब जो क्वेश्चन का आंसर पता है, यही आंसर है जो ही प्लेज्ड से यहाँ तक का आंसर है. However, this is not meeting the word limit. This is what he said. This is what he actually mentioned कि उसने ये कसम खाई थी कि वो सारे लोगों को निजात दिलाएगा, उनको पूरा फ्रीडम दिलाएगा. कहाँ से? पॉवर्टी से. ठीक है. और डेप्रीवेशन से, किसी चीज़ की जो भी कमी है, या फिर डिस्क्रिमिनेशन से यानी कि भेदभाव से. ठीक है. लेकिन क्योंकि अब मुझे क्या कहते हैं अपना वर्ड लिमिट को मेंटेन करना है, इसलिए मैंने जो ऊपर जो 3 लाइंस दी हैं वो मैं कॉन्टेक्चुअल रखूंगी. आप कुछ भी नहीं लिखने वाले हो. मैंने क्या लिखा है, मंडेला सेट आउट आइडल्स फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका. ठीक है. मैंने बोला कि उसने आइडल सेट करे किसके लिए, साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए. क्यों? क्योंकि उसको ना डीप फीलिंग्स थी, उसके अंदर बहुत ज्यादा डीप फीलिंग्स थी अपनी कंट्री के लिए और अपने कंट्री मैन के लिए. दैट इज वॉट यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट.
ऑलराइट, हे वीरेंद्र, हाय डियर। उसके बाद फिर मैंने उसको से लिंक कर दिया। तो आंसर लिखने की ये एक टेक्निक होती है कि आपको कोहेरेंस मेंटेन करना होता है, यानी कि जो आप पहले लिख रहे हो उसका लिंक उसके साथ होना चाहिए जो बाद में आ रहा है। इट डज रियली मैटर। So there has to be that coherent situation that you have to be very careful about. समझ आ रही है ये बात? Is that clear to everyone? Yes. Hi Rijal. Hi dear. Welcome to the session. Alrighty, Virendra, my dear, if you're not interested, why don't you just kick yourself out of the class? The others are starting right now, okay? So I'm actually teaching for the students who are really listening to me right now. If you're more interested in knowing like who is listening or who is not, why don't you go to some other class? I'm sure you'll find some other class also going on live somewhere on some channel. Okay, just take it as a piece of advice and be kicked out. Alrighty, people. Now the next question, everybody. What did Mandela think about the oppressor and the oppressed? This is again one of the very important questions that you have to keep in your mind. All right, if the author has written whole story in the past and the question is stating the present tense, then we have to present the answer in past or present. Okay, Akriti, I have mentioned this earlier also. I'm saying this again, and I have mentioned the same thing right at the beginning of this session also. I think you joined later on. I told this like if a question is being asked in your simple present tense, okay, but the information given in the text related to that question is in the total past tense, then of course you're gonna use the past tense because you will be totally relying upon the information given in the question related to the particular question you have right in front of you. So in that case, you will definitely be using the tense which is given in your book and you would not be relying on the tense which is given in your question. Okay, however, like after you have incorporated the past tense, make sure that you're maintaining a consistency because then we are relying on the information given in the book. Okay, so that's like an important thing. Is that clear to everybody? Got that? Yeah, Kriti, is that clear? Okay, so now everyone, Mandela thought about the oppressor and the oppressed that both are robbed equally. ठीक है, दोनों ना बहुत अच्छे से क्या कहते हैं रॉब हो जाते हैं किस चीज से उनकी क्या कहते हैं शांति चली जाती है राइट सो sorry, a man, not male, I'm sorry for that. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. So like this is the phrase that you have to be using in your answers. It's like an important one. इन द सेम वे इफ हिज फ्रीडम इज टेकन अवे, इसी सेम तरीके से अगर उसकी फ्रीडम को ले लिया जाता है वापस, दे बोथ आर विदाउट फ्रीडम. So both of them they must be liberated because of course if you are just like showing the hatred to me and you're keeping me like under some sort of like foundations, so you will not be liked by me, so you'll be becoming a prisoner of hatred because I'm hating you hard. Okay, and similarly you being the oppressor like who is just like making me feel so bad and everything, so you're of course okay like robbing my freedom. So that way like both of them they are equally robbed of each other. Okay, is that clear to everyone? Is that clear to everybody? Got that? Harshit, the thing is like the oppressor, okay, basically if you are just being so brutal to me, all right, so of course my if you're brutal to me my freedom is like taken away, all right, I don't have freedom. Similarly because you are behaving badly with me, I won't like you, I would hate you, so you'll become a prisoner of hatred, you'll be in the jail of hate, right? So both of you like sorry, so in that case both of us we won't be like free. You are the prisoner of hatred and I'm already not allowed to do the things that way. Okay, Virendra, all right, your advice has been taken, all right, very kindly. Thank you so much. I'll consider it. Okay. So this is the answer, a 3-marker question. That's what you have to write and you're good to go. Nothing more than that is like really needed in the class. Okay. Now we are, I mean, sorry, in the question of the class. Next question. How did hunger for freedom change Mandela's life? मतलब जो उसकी भूख थी ना आज़ादी के लिए, उससे उसकी जिंदगी कैसे बदली गई? In the beginning of his life, उसकी जिंदगी की स्टार्टिंग में मंडेला was not aware about freedom. उसको ना मतलब कुछ नहीं पता था किसके बारे में, आज़ादी के बारे में. Alright, he was not aware about freedom. Later, Mandela found that his freedom had been taken away from him. बाद में उसे पता चलता है कि जो उसकी जो freedom है, यानी उसकी जो आज़ादी है, वो उससे ले ली गई है. As a student, he wanted freedom only for himself. जब वो बच्चा था, उसको freedom सिर्फ अपने लिए ही चाहिए थी. Alright.
but slowly his own freedom became the greater hunger for the freedom of his people. लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी खुद की आज़ादी उसकी ज़्यादा बड़ी भूख बन गई उसके लोगों की आज़ादी के लिए. इससे सब कुछ चेंज हो गया. All right, this changed the things completely. All right, do you get that? This changed the things completely. इससे जितनी भी चीजें थी वो पूरी अच्छे से complete हो गई. All righty. Okay, PYQ कितने we'll be doing it. Okay, PYQs हम लोग करेंगे almost मैं last 10 years के ही उठाती हूँ. All right, so हम लोग वो करेंगे प्रियंका, but we'll be starting the PYQs in the month of December. All right. ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं. एवरीबडी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, ओके वी आर डन विद दिस क्वेश्चन. या तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेज टू मंडेला? करेज का मतलब क्या है? मंडेला के लिए करेज का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू मंडेला, करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर. ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. बहुत सारे बच्चे ना इनको दोनों को मतलब एक साथ ले लेते हैं, ठीक है, कि करेज का मतलब एब्सेंस ऑफ फियर होता है और ट्रायम्फ ओवर इट भी होता है. नथिंग लाइक दैट. मंडेला के हिसाब से करेज जो था वो एब्सेंस ऑफ फियर नहीं था बट ट्रायम्फ ओवर इट, यानी कि उसके ऊपर जीत. ट्रायम्फ बेसिकली इज लाइक विक्ट्री. Okay, the brave man, all right, according to him. Now this is also one of the like things that you need to remember, like the definition of like bravery, like who is a brave man. So brave man is not he who does not feel afraid. मतलब brave man वो नहीं है जिसे डर नहीं लगता, but he who conquers that fear, यानी कि बल्कि वो होता है जो उस पर जीत हासिल कर लेता है. मंडेला लर्न द ट्रू मीनिंग. मंडेला ने सच्चा मीनिंग लर्न किया करेज का अपने कॉमरेड से मतलब कि जो उसके साथ में उसके साथी थे उससे उन्होंने वो मीनिंग लर्न किया. इज दैट क्लियर एवरीबडी? डू यू गेट दैट एवरीवन? डू यू गेट दैट? हैव यू ऑल अंडरस्टूड मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ? दीज आर द आंसर्स दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट. ऑल राइट, ये सारी चीजें ना आपको हमेशा ध्यान में रखनी ही पड़ेंगी जिससे कि आप एक वर्दी आंसर देखो. देखो मैं ना आप लोगों को सारे आंसर्स ऑलमोस्ट आई प्रोवाइड टू ऑल ऑफ यू. ओके, इफ यू विल बी अटेंडिंग ऑल माय स्पेशल क्लासेस देन इन दैट केस लाइक यू विल बी रियली लाइक इन ग्रेटर बेनिफिट्स, एंड इफ यू विल बी अ प्लस स्टूडेंट लाइक मच मोर greater benefits in that case. So I'll be of course helping you with all the types of the answers that you'll have to write in your examination. However, what is really important is that you should be able to understand the language of the question in your examination. Don't be confused right in there, because be very confident that I'll be providing you all the answers. You'll be having the answers of all the questions. It's just that you will have to understand the language of the question in your examination, in your like question paper, because the language can play with you. It can be a little tilted, it can be a little trickier, so you'll have to just understand that language. Once you'll understand it, it'll become easy for you to go ahead with it in the correct way. Okay, got that? Is that clear? Courage is not something that I don't have any fear of anything, but it's something I can handle all the things in a best way. Alrighty, here we go. Okay, here we go. Alright, nobody's spamming right now. If somebody would spam, of course, I'm gonna block the spammer. Don't worry. That's my favorite thing. Alright, going ahead, everyone. We have the next question. What was unique in the inauguration ceremony? मतलब जो inauguration ceremony हमारी हुई थी वहां पे unique क्या था? ठीक है, वहां पे अलग क्या था? Inauguration ceremony took place in the amphitheater formed by the Union buildings. All right, this is what we are here talking about, which is in Pretoria. That's what you have to be very careful about. ठीक है, so जो inauguration ceremony है, no, all right. Okay, so inauguration ceremony, all right, inauguration ceremony में मतलब inauguration ceremony का, all right, inauguration ceremony का क्या है कि it took place in the amphitheater. Amphitheater का क्या मतलब होता है? Amphitheater, what do you mean by the term amphitheater? हाँ शिवम, go ahead with your doubt बेटा. What is your doubt? Tell me, आपका क्या doubt है? You can ask me your doubt. All right. Yeah, tell me what is the meaning of amphitheater. All the words are very important. You should be very clear about the meanings of the words. They are very important. Okay? Quickly tell me.
Tell me the meaning. Tell me the meaning of amphitheater. The inauguration ceremony took place in the amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. Amphitheater का मतलब बताओ. ना ना बेटा, amphitheater is like a theater with open roof. That means कि उसके ऊपर roof नहीं होती है. So that is what is known as amphitheater. All right. So it was being formed by the Union buildings in Pretoria, and for decades, यानी कि सालों तक, this had been the seat of white supremacy. White supremacy क्या होता है? Rajol beta, please learn the meanings. I have like made you all understand all these things like a lot many times. I want all of you to learn the meanings, okay? You cannot go in your examination without learning the meanings of the words that are there in the chapter. That's not the right way. That'll be like so difficult for you people. So for decades this had been the seat of white supremacy. White supremacy का क्या मतलब होता है कि जो white rulers थे उनकी ये seat थी. Now it was the oath taking ceremony day for South Africa's first democratic non-racial government. तो अब वो क्या था, ये oath taking ceremony थी, यानी कि शपथ लेने वाला दिन था. ठीक है, और साथ के साथ ये बेसिकली फाउंडेशन थी पहली डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट की. इट वॉज रियली अ यूनिक ओकेजन. ये बहुत ही ज्यादा एक यूनिक ओकेजन था. ऑल राइट, लेफ्ट एंड लेफ्ट का प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, फिर भी लेफ्ट के जगह लेफ्ट क्यों लिखा है बेटा? वो पोएटिक लाइसेंस है शिवम, वो पोएटिक लाइसेंस है. लेपेन लेप लिखा है ना वहां पे, उसको बस एक तरीके से पोएटिक लाइसेंस उन्होंने यूज किया है. दैट्स इट, दैट्स द पोएट्स चॉइस ऑफ वर्ड्स. वी कैन नॉट क्वेश्चन दैट. सो दैट इज पोएटिक लाइसेंस. Okay, just to show the effect that the animal won't stop. It will definitely be attacking you no matter that how much you are begging for its retreating कि वो वापस जाए. No, it will just keep on killing you. The more you're gonna shout, it'll like attack you more. That's what it is. समझ में आया शिवम? Did you get that? All right, here we go. Okay, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. What did the journals and police officers do on that day? मतलब कि हम बात कर रहे हैं ये ओथ सेरेमनी डे का. ठीक है, जिस दिन ओथ ली गई थी ना, उस दिन जो जर्नल्स थे और जो पुलिस ऑफिसर्स थे वो लोग उस दिन क्या कर रहे थे. सो जो जर्नल्स और पुलिस ऑफिसर्स थे वो लोग भी उधर थे. ठीक है, प्लीज कीप नोटिंग द टेंसेस, ओके, एंड हाउ आई एम प्रोग्रेसिंग द आंसर्स, बिकॉज the more you'll be like concerned and noting the things, no, all the minute things that we notice like helps us in understanding the mode of language, like how you're forming the language, how you're forming the sentences. All these things really do matter. All right, is that clear? Is this making sense to everyone? Okay. Now here we are. Let's get going, everybody. So the journals and police officers, they were also there. They were in the same uniform. They had ribbons and medals on their chest. So उनके ribbons थे और medals थे उनके chest पे. Bedacked, okay, the word. They saluted Mandela with great respect. Mandela was the first black president of South Africa. Although many years ago they might have arrested him. Now this is what he had like mentioned while he was talking about their like exactness and the way they were behaving. He mentioned it that he was aware of the fact that if it would have been the years ago situation, then those white journals and the officers, they would have arrested him. But today they were saluting Mr. Mandela because he was becoming the president of the country. All right, and discrimination occurred. Shivam, that is like very much like that. This very particular question is like totally subjective. However, the people, they had some sort of like hatred built against them. Okay, like we cannot say who is hating whom. All right, that was like blacks, they were considered like to be dominant because black was a color which was considered to be not very respectful color. Okay, but that was just a way of thinking. It was just the discrimination, nothing else than that. All right, because that was just a stupid kind of a thinking that was running at that time, because no color defined the personality of a person. Okay, got that? Priyanka, I'm coming up with this particular session. It'll be on 26th.
Okay, you'll find it on 26th or maybe 27th. All right, but you will definitely be finding that session, okay, before the end of this very particular month. So don't be worried about it. I'm gonna come up with trees. I'm gonna come up with fog as well. So like I'll be helping you all with every kind of content. Don't be worried about anything. The only situation that I mean, the only kind of commitment I need from all of you is please keep following me dedicatedly and keep attending the special classes as well, because therein you guys can just raise your hands. You all can ask me the questions. I'll be giving you personal time if you would have any doubt. So you better attend the classes. Alright, and that too on a regular basis. Okay. Now the next question, which is again one of the very important ones. Describe Mandela's life journey from a prisoner to the first black president of South Africa. तो आपको मंडेला की लाइफ जर्नी बताना है कि वो एक प्रिजनर से पहले फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के कैसे बने. तो सी आपका ना क्या कहते हैं बिफोर यू रीड सेक्शन जो दे रखा है, ठीक है, इन चैप्टर्स में आपका जो बिफोर यू रीड सेक्शन दे रखा है ना, यानी कि जैसे नेल्सन मंडेला हो गया, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक हो गया, इनमें ये वाला बिफोर यू रीड सेक्शन जो है, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, यू हैव टू बी लाइक वेरी क्लियर अबाउट इट, यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट इट, यू हैव टू रीड इट, क्योंकि उसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना, दैट इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, जो भी इंफॉर्मेशन उसमें दे रखी है, दैट्स लाइक रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल. So, Nelson Mandela did a lifelong struggle against the racial discrimination in South Africa. He had to pass many years of his life as a prisoner in the jail. At last, the first democratic elections were held in South Africa. His party won 252 seats out of 400, and he became the first black president of South Africa. So, he had spent almost 30 years in jail. You can be exact and precise, all right, in your short answer questions, and whenever it is about the detailings, like if you need to like present the details, you have to provide the descriptive answer, and descriptive answer basically needs the details. All right, so that always comes under the category of long answer question. Keep it in your mind, it's like a very important point, do not forget it. Alrighty, is that clear to everyone? Okay, अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Alright, which is like one of the very important questions, because it does talk about something like what did he mean. Like this question was being asked in your previous year question papers as well, so you better remember that. In fact, इस chapter में everyone, this is like very important that you understand every phrase, क्योंकि जो भी important phrases है ना, उनके उनसे related questions आपसे पूछे जा सकते हैं. तो be smart enough कि जो आपसे पूछा जा रहा है आप उसका सही आंसर दे पा रहे हो. All right, it really is important. All right, it's like a very important thing. Okay, here we go. So you're saying if ever you should go by chance. Here should means necessity of future. No, Shivam. Basically, if ever you should go by chance, should basically represents that if there comes any necessity or compulsion. All right, basically should वहाँ पे आपको बता रहा है possibility. Okay, like if there comes any possibility or there is any chance, okay, that you get to visit, all right, kahin par. So now that is what it means, like if ever you should go. So should is here talking about the possibility, all right, the possibility, like there could be a possibility that by chance I go there. So the term possibility is the appropriate one in terms of should. It is not really in terms of like something that is like necessarily visiting. Okay, that is like an important point. I hope you got that. ठीक है, समझ में आ गया शिवम? All right. So at the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. ठीक है, so what does he mean by this? ये important point है. What is the glorious human achievement as he speaks at the end? ये बहुत important question है. ठीक है, आपको इसका जो मीनिंग है वो डिकोड करना अच्छे से आना चाहिए, और आपको एग्जैक्ट मीनिंग भी बताना इज इम्पोर्टेंट. Rajol, you have already said hi to me. You were already there in the class. However, hi again and good afternoon. Hey Bhumi, hi dear. Welcome to the session. So at the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. बहुत important है. It was the policy of apartheid. So extraordinary क्या था? हद से ज़्यादा. Human इंसानों का disaster मतलब तूफान, एकदम बर्बादी, destruction. ठीक है, सो मतलब अब ये बेसिकली किस चीज की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है पॉलिसी. कौन सी पॉलिसी की बात हो रही है? पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड की.
ठीक है, अपार्थाइड की पॉलिसी की बात हो रही है साउथ अफ्रीका में। पीपल वर द विक्टिम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो लोग थे वो प्रताड़ित थे, किसकी वजह से? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि उनके कलर के बेसिस पे उनमें भेदभाव किया जाता था। नाउ दे हैड अचीव फ्रीडम, अब उन लोगों को फ्रीडम मिल गई। दे विल नेवर बी ऑप्रेस्ड, अब उन पे कभी भी ज्यादती नहीं की जाएगी। इट वॉज द एंड, तो अब खत्म हो गया था। इट वॉज द एंड ऑफ द मोस्ट इनह्यूमन सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। तो वो अब एंड था सबसे बड़ा किस चीज का? जो इन ह्यूमन सिस्टम था ना गवर्नमेंट का, उसका एंड था। उसको उन्होंने क्या बोला था कि वो एक ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट था, कि फाइनली जो ये इन ह्यूमन सिस्टम था गवर्नमेंट का वो खत्म हो गया। वो दैट वाज नोन एज ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। एंड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर वाज द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड which was running in South Africa, wherein the people were becoming the sorry wherein the people were the victims of racial discrimination. Got that clear? Hi Buri, I'm very well, thank you so much. Alrighty, here we go. Hey Rajal, hi dear. Hey Deepika, hi. Okay, hi Buri, hi dear. समझ में आया? सो दिस इज अ 3 मार्कर थिंग। आप डायरेक्टेड आंसर लिखोगे। 6 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाकी किसी और क्वेश्चन के साथ क्लब करके। कभी भी किसी क्वेश्चन को किसी और क्वेश्चन के साथ अगर क्लब किया जा रहा है तो बेटा हमेशा ध्यान रखो कि आप उसे एक बार फिर से री रीड कर रहे हो, जस्ट टू मेक दिस श्योर एंड जस्ट टू गेट दिस कॉन्फर्मेशन कि हाँ आपने जो आंसर लिखा है दैट इज लाइक एन एप्ट आंसर एंड दैट इज नॉट रॉन्ग। ठीक है, सो जस्ट टू हैव दिस कॉन्फर्मेशन मेक श्योर दैट यू आर गोइंग अहेड विद व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट हियर। ओके, इट्स लाइक एन इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी केप्ट इन योर माइंड। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाई वर टू नेशनल एंथम्स संग? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो दो नेशनल एंथम्स का नाम क्या था? Tell me the names of those two national anthems. That's like important. The way they are being written, you have to learn them in the same way. A lot of students commit mistake in writing their spellings and hence they lose marks. I don't want you guys to lose the marks, so please remember them correctly. Now tell me the names of those two national anthems in the comment section, and that too in the right way. Quickly everybody. जल्दी से comment section में बताओ. Quickly everyone. Come on quickly guys. What are the names? Okay, one is the stem, all right, yup, and Nikosi Sikilil, right? E Africa, right? That is what we have to keep in mind. However, the spelling is something which is more important, so you have to keep in mind the spellings and tell me about it. Nikosi Sikilil, E Africa. Yeah, Argha, you're absolutely right. Yeah, the stem fan, South Africa. Okay, 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 got that. So it was an occasion of installing the first democratic non-racial government, which was formed by both the whites and the blacks. Both had their different anthems. In order to give equal honor and recognition, both the national anthems were sung. So, like the answer to this question is like these two words, like in order to talk about the equal honor and the recognition. However, we cannot write these two words in a 3 marker thing. As I told in one of the previous questions, you have to maintain a coherence, right? ऊपर आप जो भी लिखोगे उसका थोड़ा सा connection मतलब नीचे आपके आंसर से रहना चाहिए। तो वो एक ऐसा ओकेजन था जहाँ पे हम इंस्टॉल कर रहे थे डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, जो फॉर्म हुई थी बाय बोथ द वाइट्स एंड द ब्लैक्स। सो दिस इज द आंसर। आई मीन मैंने कोहेरेंस मेंटेन करने के लिए आई हैव रिटर्न समथिंग व्हिच इज लाइक टोटली कॉन्टेक्चुअल. इफ यू आर कीपिंग द थिंग्स दिस वे इट्स गोना बी हेल्पफुल फॉर यू इन वेयर यू आर गोना रॉक इन इट. सो दैट्स लाइक एन एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर. ठीक है, 3 मार्क्स में हमारा डन है, ज्यादा हमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. Alrighty. Next question, everybody. How does Mandela describe the systems of government in his country? So ये एक important question है. I would rate it as very important question. So just keep it that way. Alright. पहला in the first decade and in the final decade of the 20th century. Okay, so first decade and in the final decade of the 20th century. In the first decade of the 20th century, the whites erected is like they formed a system of racial discrimination against the blacks. They set up the most inhuman system of apartheid where the blacks were denied the fundamental rights. Fundamental क्या होता है? हमारे basic rights.
ठीक है, उनको बेसिक राइट्स अलाउ नहीं थे फ्रीडम के। एंड इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी द सिस्टम वाज ओवरटर्न। ओवरटर्न का मतलब कि जो पूरा सिस्टम था वो पूरा पलट गया था। ऑल राइट दीपिका, उसके आगे भी है बेटा ई अफ्रीका। ओके, दैट्स व्हाट यू हैव टू राइट एंड दैट हैज टू बी रिटर्न द वे इट्स बीइंग गिवन इन योर बुक। अगर आपको नहीं है याद बेटा, प्लीज रीड इट फ्रॉम योर बुक। ठीक है। So the policy of apartheid was uprooted from the land and a new non-racial democratic government was installed to ensure equal rights and freedom to all the people of South Africa. That is what we are looking at. Okay. Third, आपका, I mean, the next question that we are coming to is how were Seagull's parents helping his brothers and sister for perfecting them in the art of flight? Would you please tell me the name of the chapter in the comment section? What is the name of the chapter? Chapter का नाम बताओ everybody. What is the name of the chapter? Tell me the name of the chapter in the comment section. I would like to know that. The names of the chapter should be like on your tips. You should learn them the way they are. Okay. It's like a very important point. Okay, that is his first flight. Absolutely correct, Arga. That's like first flight. ना हर्षित बेटा, his first flight. Be particular. ठीक है, मैंने हमेशा बोला है बहुत स्पेसिफिकली आंसर दिया करो। लैंग्वेज है, लैंग्वेज में एक अ का भी मतलब होता है, एक द का भी मतलब होता है, एक फुल स्टॉप, एक कमा, एक सेमी कोलन, एक कोलन, हर चीज का मतलब होता है। तो यू बेटर पे अटेंशन टू एवरीथिंग। So, how were Seagull's parents helping his brothers and sisters for perfecting them in the art of flight? So, the young Seagull was afraid of flying, but his two brothers and a sister had started flying. But his parents were teaching them to be perfect in the art of flying. They were teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. So, this is like an important point I am mentioning right in here. All right. जो यंग सीगुल था उसको उड़ने से डर लगता था, लेकिन उसके दो ब्रदर्स थे और एक सिस्टर थे जिन्होंने फ्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। तो उनके पेरेंट्स उनको पढ़ा रहे थे, सिखा रहे थे कि हम परफेक्ट कैसे बने आर्ट ऑफ फ्लाइंग में। तो दे वर टीचिंग देम, क्या कर रहे थे वो, उनको टीच कर रहे थे, उनको बता रहे थे कि आपको स्किम कैसे करनी है वेव्स को। दैट मीन्स दैट यू हैव टू जस्ट टच द सरफेस ऑफ द वेव एंड यू हैव टू जस्ट गो अप देन। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, कि मतलब अगर आपको फिश, आई मीन यू हैव टू लुक फॉर योर फूड, सो हाउ यू नीड टू plunge into the water. Okay, can I complete the whole English syllabus in 2 days? Arga, if you are done with it and if you have revised everything and if all your concepts and everything is clear, so completing, I would not use the word complete. I would say the revision can be completed in the 2 days. Okay, but that is like completing the whole syllabus is like really a tough task if you're left with any of the chapters that you had not studied earlier. I mean the deep study, if you are done with the deep study of your chapters and the literature part and the reading part and everything, then the revision can be done in 2 days. However, the syllabus cannot be completed in 2 days. If you're sitting today to learn and read the chapter for the first time, then that's not the right way to study. Okay, so I would recommend, like, if you haven't studied well yet, start doing it now because it's high time. Okay, chali. Now we are moving to the next question. Alrighty, here we go. Still, they took no notice of him. What did the seagull do to draw the attention of his family? तो ये बहुत बड़ी लाइन है, ठीक है, आई मीन एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिससे कि हमें थोड़ा सा सीगुल के बारे में पता चलता है दैट ही हैड दिस फियर एंड ही हैड लैक ऑफ बिलीफ इन हिमसेल्फ. All right, he had no confidence. That is what we come to know. So the young seagull stepped slowly out to extreme edge of the ledge. He was standing on one leg with the other leg hidden under his wing. He closed one eye, then the other, and pretended to be asleep, and then they looked no notice of him. So this is something you need to work upon कि जो young seagull था वो मतलब धीरे से extreme edge पे गया ledge के, वहां पे वो खड़ा था एक टांग पे, ठीक है, और दूसरी जो टांग थी उसकी उसने वो छुपा ली थी अपने पंख के अंदर, ठीक है। एक आंख उसने बंद करी, फिर उसने दूसरी आंख बंद करी एंड प्रिटेंड, प्रिटेंड करना मतलब कि दिखावा करना कि वो सो चुका है, जिससे कि उसके पेरेंट्स को डर लगे कि मेरा बच्चा गिरने वाला है, सो दे वुड कम रनिंग, लाइक दे वुड कम फ्लाइंग टू हिम immediately. However, the parents didn't take any notice of him because they were so strict in teaching him, because they were so strict in making him realize that it is important and imperative for him to just go ahead with what is really needed to be done. Okay,
Now, the next question. But he kept calling plaintively, and after a minute or so, he uttered a joyful scream. Why did the young seagull utter a joyful scream? Okay, plaintively is something like continuously. Okay, like without a break, he was continuously calling his parent. So the young seagull, okay, was desperately hungry. बहुत ज़्यादा hungry था वो. So he screamed with joy when he saw his mother flying. So वो चीखने लगा, ठीक है, जो खुशी के साथ जब उसने देखा कि उसकी मम्मी भागती हुई, सॉरी, उड़ती हुई उसके पास आ रही हैं with a piece of fish in her beak. He leaned out eagerly. Leaned out मतलब कि to get out. ठीक है, eagerly मतलब कि बहुत ही ज्यादा खुशी से, tapping the rock, rock को tap करके with his feet trying to get nearer to her. All right, so that made him scream. So scream basically not refers to the fact that he was like crying or matlab he was shouting out of any fear. No, nothing like that. Instead, it was something joyful. He was enjoying that. Okay, he was finding it really amazing. He was enjoying that. Okay. All right. Is that clear? Harshit, the classes for the 10th take place right at 2 p.m. on a daily basis. However, on weekends, the timings are a little different. So you'll have to keep a check on it. Okay. But on YouTube, the classes take place at 2 p.m. Now, when did the Seagull's flight begin? ठीक है, उसकी जो पहली फ्लाइट थी वो कब स्टार्ट हुई? डिड आ गया यहाँ पे, ठीक है, साथ के साथ बिगिन. मैंने ये बात बहुत बार आपको रिपीट किया है. डिड आपका सेकंड फॉर्म होता है, लेकिन उसके साथ हमेशा रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है. कंफ्यूज मत हुआ करो, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे अपने एग्जाम में करते हैं और आपके मार्क्स करते हैं. तो एक काम करो, अपने सामने जहाँ पे भी आपका स्टडी टेबल है वहां पे ये लिख लो, डिड के साथ रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है. इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. तो द सीगुल्स फ्लाइट बिगेन, जो सीगुल है उसकी फ्लाइट स्टार्ट हुई थी व्हेन ही मूव टू द ब्रिंक ऑफ द लेज. बिल्कुल एकदम कोने तक पहुंच गया था ना, बिल्कुल एंड लेवल तक जहां से बस अब गिरना ही हो सकता था. ही डाइव्ड एट द फिश विच वॉज इन हिज मदर्स बीक. सो वो डाइव कर रहा था. डाइव के साथ यहाँ पे एट आएगा, क्योंकि वो कोई क्या कहते हैं, वो प्लंज नहीं ले रहा था, कि डूबना नहीं था उसको, वो किसी चीज को झपट्टा मारना था. इसलिए यहाँ पे प्रेपोजिशन एट आ रहा है. He dived at the fish which was in his mother's beak, जो उसकी मम्मा की बीक में था. His fight ended when, उसकी जो फाइट है, all right, ठीक है, sorry, his flight ended when, sorry, his fight ended when, okay, after being tired of his first flight and being weak, he dropped himself on the surface and then, sorry, surface of the sea and floated in it. That's what it happened. All right, that is where you are going to talk about. ऑल राइट, दिस इज एक्चुअली द फ्लाइट, नॉट फाइट. दिस इज फ्लाइट. उसकी फ्लाइट कब खत्म हुई? ठीक है, सो आप देख रहे हो कि हमने वर्ब्स किस तरीके से यूज किए हैं. कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो, स्पेलिंग्स को गलत मत लिखो, कॉन्टेक्चुअल वर्ड्स को लिखो, पंक्चुएशन का ध्यान रखो, ज्यादा क्या कहते हैं फैंसी वर्ड्स मत यूज करो. आपका आंसर परफेक्ट है. ठीक है, सारी मार बच्चे जहाँ खाते हैं वो होता है कि टेंसेस में प्रॉब्लम आ रही है, पंक्चुएशंस गलत यूज हो रहे हैं, या कुछ प्रेपोजिशंस गलत यूज कर रहे हो, आर्टिकल्स गलत यूज कर रहे हो. तो ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करो, उसके लिए प्रैक्टिस करो. स्टार्ट प्रैक्टिसिंग राइटिंग द आंसर्स. If you are practicing well to write your answers, no, nobody can beat you in anything, and that's gonna be like really helpful in a longer run for all of you. Okay, next question. What was his family doing on the plateau when Seagull failed to draw their attention? तो जो उसकी फैमिली थी वो क्या कर रही थी प्लेटो पे, जब जो सीगुल था उस वो अटेंशन नहीं ले पाया. द टू ब्रदर्स एंड द सिस्टर ऑफ द यंग सीगुल, जो दो ब्रदर्स थे और सिस्टर थी यंग सीगुल की, वो ना मतलब सो चुके थे, वो ना हाफ अस्लीप थे. विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक्स, मतलब उनके जो सर था वो उनके क्या कहते हैं नेक में, सॉरी, जो उनका हेड था वो उनके नेक में संक था. His father was preening the feathers with his beak. तो उसके जो पापा थे, प्रीनिंग इज लाइक कि वो मतलब साफ कर रहे थे, सही कर रहे थे फेदर्स को अपनी क्या कहते हैं बीक से, ऑन हिज वाइट बैक. ओनली हिज मदर, सिर्फ उसकी मम्मा, स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल माउंट, मतलब वो ऐसा सा एरिया था प्लेट्यू पे, so she was standing here, was looking at him. Only the mother was looking at him. So the mother, she played a very important role in teaching her kid like how to be independent and fearless, because he had to learn the very art of flight, because that was the only way for him to find food for him and to be safe. Okay, and that is what they wanted to teach them. A short answer, at least in 10. Okay, that is like at least is like not the right word. 10 lines is not appropriate. Okay, nobody tells like that. Arshit, however, in your examination, the pre boards, everything is going to be checked by your teacher. So do not
mess in that way. Follow what your teacher is saying, because ultimately in your pre-boards and your UTs and everything, the teacher is going to give you the mark. So follow. If any special instruction is being given to you in your class, then please follow what she is saying to you guys. Okay, because she is the one who is going to analyze your answer sheet in your examination. So just follow her instructions. Okay, that is what I'm gonna tell you. Next question. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. What did the young seagull do to satisfy his hunger? The seagull was feeling hungry because he could not fly and his family had left him alone for it. To satisfy his hunger, he was forced to eat whatever he found. तो उसकी हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए उसको फोर्स किया गया था कुछ खाने के लिए जो भी वो मतलब वहां पे मिल रहा था. ठीक है. Now, what did the writer feel? What did the writer feel inside the clouds? Could you please tell me the name of the chapter? यहाँ पे कौन सा chapter है? Like which chapter I am here talking about? Like inside the clouds में मैं किसकी बात कर रही हूँ? Okay, quickly tell me everybody. Inside the clouds में किसकी बात हो रही है? Whom are we exactly here talking about? Yes, everyone. All right. The black aeroplane. Absolutely correct. Very good. Okay, that is absolutely right, Arka. So when the writer entered the clouds, verb, okay, it became impossible to see outside the aeroplane. The aeroplane jumped and twisted in the air. Okay. And all देखो ये वाली सारी चीजें है ना कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं the aeroplane twisted and jumped in the air. नहीं. पहले it jumped and then it twisted. तो प्लीज ऐसे क्रोनोलॉजिकल जो वर्ड्स यूज होते हैं उनको आप ऐसे चेंज मत किया करो बिकॉज दैट गिव्स एन इम्प्रेशन कि आपको करेक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं है. तब भी मैं कहती हूँ एक थरो रीडिंग करो, एक कीन रीडिंग करो अपने चैप्टर की जिससे कि आपको पता चल जाए लाइक व्हाट एग्जैक्टली द करेक्ट थिंग इज. ठीक है. Now, the aeroplane jumped and twisted in the air, and all the instruments like compass, जैसे कि instrument हो गए compass, etc., they all stopped working due to the weather conditions. So weather की conditions की वजह से ये सारी चीजें ने काम करना बंद कर दिया था. All right, that is what it happened. Now, the next question. How did the writer get out of the storm in the night to land safely? Again, an important question. ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. इसका आंसर कि राइटर कैसे स्टॉर्म से बाहर निकला रात को मतलब और फिर वो सेफली लैंड हुआ. तो द राइटर वाज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा. जब भी डी लिखोगे डकोटा का कैपिटल में लिखोगे. when he aeroplane when he saw the black clouds he was lost in the storm. बिल्कुल गायब था वो स्टॉर्म में. सडनली अचानक से उसको एक ब्लैक एरोप्लेन दिखता है अपनी ही साइड में विच हैड नो लाइट्स जिसमें कि कोई लाइट्स नहीं. ठीक है. उसके विंग्स पे द पायलट इंस्ट्रक्टेड द राइटर. पायलट ने इंस्ट्रक्ट कर दिया था राइटर को टू फॉलो एज ही हैड लॉस्ट द वे. ठीक है. उस फॉलो करने के लिए क्योंकि उसने रास्ता खो दिया. ही ओबेड हिम लाइक अ चाइल्ड. उसने उसका साथ दिया जैसे कि एक बच्चा क्या कहते हैं पीछे पीछे जाता है. ठीक है. Now he was very happy to follow him. वो बहुत ज़्यादा खुश था उसको फॉलो करने के लिए. After some time the pilot of another plane started to land. कुछ टाइम के बाद जो पायलट था दूसरे प्लेन का वो लैंड करना उसने स्टार्ट किया. सो राइटर उसको फॉलो करने लगा ब्लाइंडली थ्रू द स्टॉर्म एंड केम आउट ऑफ द क्लाउड्स. और क्लाउड से बाहर आ गया. ही सॉ द लाइट्स ऑफ द रनवे एंड लैंडेड सेफली. उसको लाइट्स दिखी रनवे की एंड ही लैंडेड सेफली. ओके. लैंडेड सेफली. ये 3 मार्क्स में इनफ है for you. Just write it in your examination and just go ahead with it. Is that clear? Is that clear to everybody? Okay, is that making sense to everyone? All right. Chaliye. So now Anne was not alone in this world. How? So what is the name of the chapter? Can anyone tell me the name of the chapter in the comment section? The name of the chapter is from the Diary of Anne Frank. A lot of students write the Diary of a Young Girl. That is the name of the novel, the actual one. The very chapter has been named as from the Diary of Anne Frank because it is an excerpt that has been taken from there. So you better remember it that way. एंड वॉज नॉट अलोन इन दिस वर्ल्ड. वो अकेली नहीं थी इस दुनिया में. शी हैड लविंग पेरेंट्स. उसके बहुत अच्छे प्यार करने वाले पेरेंट्स थे. एंड अ 16-year-old सिस्टर. और एक 16 साल की बहन भी थी. शी हैड अ डीप इंटीमेसी विद 30 पीपल. उसके अच्छा क्लोज कनेक्शन था. ठीक है. 30 लोगों के साथ वो उनको फ्रेंड्स बोल सकती थी. शी हैड अ फैमिली लविंग आंट्स एंड अ स्वीट होम. सो दैट्स हाउ वी आर गोना डिस्क्राइब. इट्स लाइक इनफ फॉर यू फॉर योर 3 marker thing.
Now, why was Anne in tears when she left the Montessori school? So again, we see the past tense form of the verb that has been used. All right, from the diary of Anne Frank, Deepika. Please remember that. Arga, yep, you are absolutely correct. Okay. Anne studied at the Montessori school. She stayed there till she was in the sixth form. ठीक है, जब तक वो sixth class में थी वो वहां पर रह रही थी. She was very much attached to her teacher and headmistress, Mrs. Cooperus. At the end of the year, they were both in tears as they bid a heartbreaking farewell. Heartbreaking farewell basically refers to something like when like you are parting from somebody and you're not really liking it. Your emotions are so overwhelmed and you cannot take it. Okay. Why did Anne jump with joy? Okay, Anne had already written two essays as punishment. She had exhausted all her views about chatterboxes. When she got a third essay to write, she was at a loss. So she wanted something original. Her friend Sen offered to write it in verse and jumped with joy. ऑलराइट, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे बच्चों को आंसर नहीं आता समझ में कि कहाँ पे वो जंप कर रही थी जॉयस के साथ, जब उसको एक थर्ड पनिशमेंट मिली थी. ओके, जब अदर क्वैक 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 said मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, तो वहां पे like she was out of all the ideas, and when her friend said okay, she offered that like she'll be helping her, and she suggested her to write it in verse refers to your poem. Then she was jumping in joy, then she was like very happy. Okay, that's what we see right in here. Okay. Now, next question to everyone else. Why was Anne's teacher annoyed with her? How was she able to bring about a change in his attitude towards her? Okay. तो अब इसमें इस क्वेश्चन में आप क्या बात करोगे? आप मिस्टर कीजिंग की बात करोगे, उन्होंने जो जो पनिशमेंट उनको दी थी आप उसकी बात करोगे. हम थोड़ा इलेबोरेटिव मैनर में बात करेंगे. ठीक है. Why was Anne's teachers annoyed with her? How was she able to bring about a change in his attitude towards her? So Mr. Keesing, her math teacher, was annoyed with Anne because she talked too much. बहुत बात करती थी. When she did not improve, despite several warnings, he punished her. ठीक है, बहुत warnings के बाद जब वो improve नहीं हुई उसको punish किया गया. The punishment was what? Punishment क्या था? Punishment था extra homework. She was supposed to write an essay on a chatterbox, then an essay on an incorrigible chatterbox, and finally, quack, 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 said Mr. Chatterbox. Now the point that you have to maintain right in here is, जो titles थे essays के, उनको आप exactly वैसे ही लिखोगे. They have to be like totally exact and precise. So in his first essay, Anne argued that talking was a student's trait. Talking एक बच्चे की trait है, character है. And her mother talked too much. और जो उसकी मम्मा है वो बहुत ज़्यादा बात करती थी. She could not do anything with an inherited. Inherited मतलब कि जो आपको मिला है, ठीक है? मतलब आपके parents के जीन से मिला है. All right. Finally, Anne wrote the third essay in verse form. Finally, वो जो third essay लिखती है ना वो एक verse form में लिखती है, यानी poem लिखती है. After reading the poem लिखने के बाद Mr. Keesing read it to the class. ठीक है? It was about three ducklings bitten to death by their father's swan because they quacked too much. And after that, Mr. Keesing never gave her any punishment. So this is the way you're gonna progress your answer. Okay, it should be linked with what you're mentioning in the first sentence, then the second, and then so on. So just keep it that way. All right, clear? Okay. Okay, Deepika, I'll try that. How did Buddha get enlightenment? Name the chapter. Chapter का नाम बताओ. How did Buddha get enlightenment? Chapter का नाम please. What is the name of the chapter? Quickly guys, tell me. Easy है, right? और एक बहुत important chapter है. या दस नहीं अर्घा, यही एक इम्पोर्टेंट चीज मुझे देखनी थी. देखो हमने ना ये चैप्टर एक सोर्स से उठाया है. यहाँ पे जो बनारस की स्पेलिंग है वो ES है. जब भी आप कोई चीज किसी सोर्स से उठाते हो आप उसको एग्जैक्टली वैसे ही रखते हो. आप डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते हो ना स्पेलिंग. तो इट्स BENARES, इस तरीके से लिखो. AS नहीं, आपने अपनी बुक में भी देखोगे तो ऐसे ही लिया गया है. ठीक है. तो बुद्धा को एनलाइटनमेंट कैसे मिला, यानी एनलाइटनमेंट मतलब उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कैसे हुई, उन्हें फाइनल सच्चाई का पता कैसे चला. तो सिद्धार्थ गौतम वॉन्डर्ड मतलब वो घूम रहे थे 7 साल के लिए और फाइनली वो एक पीपल ट्री के अंदर आके बैठे जब तक उनको एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई. ठीक है, मतलब उनको एक ये रिलीजियस ज्ञान नहीं आया कि एक्चुअल में दुनिया में सच्चाई क्या है, असली सच क्या है.
तो 7 दिनों के बाद जब वो उस पेड़ के नीचे बैठे थे, तो 7 दिनों के बाद उन्होंने पीपल ट्री का नाम बोधि ट्री रख दिया था और वो लोगों को पढ़ाने लग गए थे और उनके साथ शेयर करने लग गए थे नई अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। एंड ही केम टू बी नोन एज बुद्धा। एंड व्हाट वाज दैट अंडरस्टैंडिंग? अबाउट द ट्रुथ ऑफ डेथ, that ultimately death is inevitable. It is the ultimate reality and we cannot deny that. That's what we are here talking about. ठीक है? So why did Buddha choose Banaras to preach his first sermon? बुद्धा ने क्यों चूज किया बनारस अपना पहला सरमन क्या कहते हैं देने के लिए? There are a lot of like there are a lot of reasons that are being given in this book and like in the chapter, and you have to be very exact when you are mentioning. So the Buddha preaching is like कि मतलब प्रचार करना. His first sermon at the city of Banaras. This city is regarded as the most holy. ठीक है, बहुत ज्यादा होली जगह है, of the dipping places of the river Ganga. Okay. That sermon has been preserved. It reflects the Buddha's wisdom, उनकी intelligence about one kind of suffering, एक तरीके की suffering के बारे में, which cannot be understood, जो समझा नहीं जा सकता. ठीक है? Now, what did Kisa Gautami do after the Buddha had asked her for a handful of mustard seeds? Kisa Gautami ने क्या करा जब बुद्धा ने उनसे एक मुट्ठी सरसों के दाने मांगे थे? So Kisa Gautami, she went from house to house to get a handful of mustard seed. People gave her the mustard seed. ठीक है, but when she asked if anyone had died in their family, they regretfully told her that the livings were few. मतलब जो जी रहे हैं वो तो बहुत कम है, लेकिन जो मर गए हैं वो बहुत ज्यादा हैं. तो कीसा गौतमी फाउंड नो हाउस वेयर समवन हैड नॉट डाई. तो कीसा गौतमी को ऐसा कोई भी घर नहीं मिला था, ऑल राइट, जिसमें किसी की डेथ नहीं हुई थी. तो कीसा गौतमी ने क्या करा? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग एंड टेलिंग हियर एंड वी आर कीपिंग इट अ बिट मोर डायरेक्ट. All right, is that clear? Okay, Mr. Indian Gaming, I hope that it went well and all the best for your next exam. What did the Buddha want to explain to Kisa Gautami? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है. ये क्वेश्चन एक ऑल्टर तरीके से भी पूछा जा सकता है, लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, आपको लैंग्वेज वहां पे एग्जाम में समझनी होगी. तो बुद्धा क्या चाहते थे, वो क्या समझाना चाहते थे कीसा गौतमी? तो बुद्धा wanted to explain to कीसा गौतमी that men cannot get peace of mind by grieving. कि इंसान को क्या कहते हैं मतलब शांति तब तक मतलब अगर वो दुख मनाता रहेगा तो उसको शांति नहीं मिलेगी. ऑन द कॉन्ट्ररी, मतलब ऑपोजिट वे में उन्होंने क्या बोला? हिज पेन विल बी ग्रेटर, जो उसका दुख है वो ज्यादा होगा और जो उसकी बॉडी है वो सफर करेगी. ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, वो खुद को क्या कर देगा? बहुत ज्यादा ही सिक कर देगा, बीमार और पेल, यानी कि पूरा उसका चेहरा पीला पड़ जाएगा. अ मैन हु ओवरकम्स ऑल सोरोज, मतलब एक आदमी जो सारे जितने भी उसके दुख हैं उसको ओवरकम कर लेता है, यानी कि उसको सहन करके आगे बढ़ जाता है, वो सारे सौरों से फ्री होगा एंड विल बी ब्लेस्ड. ये बुद्धा किसा गौतमी को एक्सप्लेन करना चाहते थे. दैट इज व्हाट ही वांटेड टू एक्सप्लेन. ऑल राइट, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नाउ वी आर मूविंग अहेड. What is the nature of the life of the human beings according to the Buddha? मतलब कि लाइफ का नेचर क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दिस इज बेसिकली समिंग अप योर एंटायर चैप्टर. रिमेंबर इट. द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ. जो इंसानों की जिंदगी है इस दुनिया में वो बहुत ही ज्यादा परेशानियों से ग्रस्त है, साथ के साथ बहुत छोटी है. ब्रीफ इज लाइक शॉर्ट, ठीक है. इट इज कंबाइंड विद पेन, वो और वो दुख के साथ ना मतलब बंधी हुई है. Nobody can avoid dying, मतलब कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता मरना. आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, मतलब क्या कहते हैं ओल्ड एज में पहुंचने के बाद जैसे मतलब कि एक क्या कहते हैं एक उम्र पे पहुंचने के बाद देयर इज डेथ, फिर वहां पे आपको सिर्फ डेथ ही मिलेगी. सच इज द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, यही नेचर है ह्यूमन. जैसे कि राइप फ्रूट्स, मतलब पक जाता है जब एक फल तो डर रहता है कि वो अब गिर जाएगा, वैसे ही जो मॉर्टल्स हैं यानी कि ह्यूमन बींग्स है, जब वो उनकी एज बड़ी हो जाती है, वो पक जाती है एज उनकी, तो वो एक डेंजर में आ जाते हैं. डेंजर कौन सा होता है? डेंजर ऑफ डेथ, ठीक है. जैसे कि सारे अर्दन वेसल्स होते हैं आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ब्रेक, तो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल. जैसे कि सारे अर्दन वेसल्स होते हैं, मिट्टी के बर्तन होते हैं कि वो एक टाइम पीरियड के बाद टूट जाते हैं, वैसे ही मॉर्टल्स की जिंदगी.
ऑल हैव टू डाई, सबको मरना ही होता है। ओनली ही कैन गेट पीस ऑफ माइंड हु डजंट लिमिट, सिर्फ उसी को मन की शांति मिलती है जो ज्यादा टाइम तक दुख नहीं मनाता या कंप्लेन नहीं करता। ठीक है, ही हु हैज ओवरकम सॉरो, वो जो ओवरकम कर लेता है सॉरो को, वो फ्री रहेगा सॉरो से और ब्लेस्ड भी रहेगा। ऑल राइट, इट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी केप्ट इन योर माइंड। एम आई क्लियर ऑन दिस? ऑल राइट, ओके मिस्टर इंडियन गेमिंग, ऑल राइट। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? लाइक दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप इन योर माइंड बिकॉज दिस इज लाइक समिंग अप द एंटायर चैप्टर इन वन गो। ठीक है, चलिए। Now, okay, we are done with this question already. Now, yeah. The next question that we have got, describe the pen portrait of a traditional Goa village baker. Could you please tell me the name of the chapter in the comment section? यहाँ पे हमारे चैप्टर का नाम क्या है कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए मुझे। Quickly, everybody. Hey, Ojas. Hi. Good evening. Lament is to grieve for a longer duration. दुख मनाना. Okay? That is what it means. Okay, it's a baker from Goa. So pen portrait में क्या लिखना है आपको? There is a deep impact of Portuguese culture on Goa life. ठीक है, बहुत ज़्यादा deep impact रहा है Portuguese culture का. Bakers is also a part of this culture. They are known as peders in Goa. उनको हम peders बोलते हैं गोवा में. When author was a child, जब author एक बच्चे थे, one could see the traditional baker in the village. कोई एक देख सकता था एक traditional baker को village में. He used to be friend of children. वो बच्चों के friends हुआ करते थे. He visited the house twice a day. वो घर जाया करते थे 2 बार. चिल्ड्रन अरोज विद द साउंड ऑफ थर्ड एंड जंगल ऑफ द बैम्बो इन द मॉर्निंग. बच्चे कैसे उठते थे? उनको थर्ड और चिंगल का साउंड आता था, वो सुबह उठ जाते थे. दे वुड रन टू ग्रीट हिम, वो भागते थे उसको ग्रीट करने के लिए. चिल्ड्रन वर फॉन्ड ऑफ स्वीट ब्रेड, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद था स्वीट ब्रेड. ठीक है, और ब्रेड बैंगल्स भी उनको बहुत ज़्यादा ही पसंद थी ये चीज़. ठीक है, और द लेडीज ऑफ द हाउस, जो घर की औरतें होती थी, ठीक है, वो ब्रेड खरीद लेती थी. जो बेकर्स थे वो प्रोफेशनल थे और एक ही फैमिली बिजनेस था. ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस था और ज़्यादातर जितने भी बेकर्स थे वो प्लम्प थे. प्लम्प का मतलब होता है हेल्दी थे. ठीक है, उनका एक peculiar ट्रेडिशनल ड्रेस था जिसका मतलब है कबाई. सो कीप इट इन योर माइंड. ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया से ऑफ कोर्स अ बेकर, जस्ट इट्स नॉट अ पेडर फ्रॉम गोवा, इट्स अ बेकर फ्रॉम गोवा. लर्न इट करेक्टली. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द क्रो चेंज द पोएट्स माइंड. जल्दी बताओ कहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया. हाउ डिड द क्रो चेंज द पोएट्स माइंड. What exactly are we here dealing with? What is the name of the whatever chapter or poem that it has been taken from? तो यहाँ पे फिर से डिड आया है. हम लोग बात कर रहे हैं आपकी पोम डस्ट ऑफ स्नो की, विच हैज बीन रिटर्न बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. सो द पोएट वाज गोइंग समवेयर इन अ स्नोई मॉर्निंग. सो पोएट कहीं जा रहे थे. ठीक है, कब? स्नोई मॉर्निंग में. वो बहुत ज्यादा दुखी थे. ऑल द ट्रीज वर कवर्ड विद स्नो डस्ट, सारे ट्रीज कवर किससे थे? स्नो डस्ट से कवर थे. अ क्रो सिटिंग ऑन अ हिमलॉक ट्री, ठीक है, एक क्रो बैठा था हिमलॉक ट्री पे, उसने हिलाया था ट्री, मतलब उसने शुक द ट्री, मतलब कुछ हुआ that it got choked, okay, and in such a way that some dust of snow fell on the poet. So this changed his mood and he became happy and relaxed. So उससे उसका mood change हो गया और वो हो गया खुश और relaxed. That's what you need to keep in your mind. ठीक है, clear everyone? Now the next question. What was the reaction of the poet when the dust of snow fell on him? ये एक important question है कि उसका reaction क्या था कि जब वो dust of snow उन पर गिरी थी. You need to remember this. ठीक है, normally people thought both crow and hemlock tree are auspicious. मतलब ज़्यादा normally लोग ऐसा मतलब inauspicious, not auspicious. ठीक है, inauspicious होता है अशुभ. ओके, और ये बेसिकली एक अनकन्वेंशनल चीज, ठीक है, यूज की गई है. तो नॉर्मली मतलब ज्यादातर लोग ये सोचते थे कि मतलब सोचते थे कि जो क्रो है और हेमलॉक ट्री, क्योंकि क्रो बेसिकली रिप्रेजेंट्स द बैड लक, इल ओमन. ठीक है, एंड हेमलॉक ट्री इज पॉइजनस. ओके, बट व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री फेल ऑन पोएट ही टुक इट इन अनदर वे. ही वॉज डिप्रेस्ड एंड सॉरफुल. देखो आपको ना कभी भी ये नहीं लिखना है आपकी किसी भी आंसर में दैट क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट डेथ.
इस पूरे पोम में डेथ वर्ड का यूज नहीं किया गया है। आपको कोई भी सिंबल यूज किया जाता है कहीं भी किसी चैप्टर में किसी पोम में, आपको हमेशा उसे कॉन्टेक्चुअल रखना होता है। ठीक है, आप आउट ऑफ द वे जाके कोई भी आंसर नहीं लिखोगे। मतलब आपको, जैसे ऑफ कोर्स हिमलॉक ट्री पॉइजन शो करता है, तो पॉइजन से ऑब्वियसली डेथ ही है, राइट, लाइक इट्स द एंड। However, in the context of the poem, it is not representing the death. It is just representing the sadness and the sorrow, the depressive mood of the poet. So you have to talk about these words. You have to write these words instead of writing death. So don't commit that mistake. If you're gonna write that, you won't be given the marks in your examination. So don't let that happen. Okay? So we see he was depressed and sorrowful, but the moment the crow shook the hemlock tree and dust of snow fell on him, he felt unburdened and relieved. So there was a change of mood. There was a transformation in his mood. Is that clear to everyone? Yeah, topper, if you want to, like, you can, but however, this is too much that you're doing in just 2 days. But if you can do it, well and good. But I would suggest to make notes, okay? If you're making notes, then when you are revising it later on, so you can just go through them and it'll be like brushing up in your mind. But why to burden yourself, guys, this way? Just keep on doing the things in a regular basis. No, why do you want to do everything in just one single day? Okay, that is not the right way of doing the things. However, if you're doing it now, try to make the notes, and later on when you're revising it, just go through those notes. That'll be helpful for you. Okay. Okay. Moving ahead, everybody. Why does the poet feel that he has saved some part of the day? ठीक है, ये एक जरूरी चीज है कि पोएट को ऐसा फील क्यों होता है कि उसने अपने दिन का कुछ पार्ट बचा लिया। क्रो शुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। क्रो ने मतलब डस्ट ऑफ स्नो डाला पोएट पे। बोथ क्रो एंड हेमलॉक ट्री आर कंसिडर्ड इनऑस्पिशियस। दोनों को हम क्या कंसिडर करते हैं? इनऑस्पिशियस। The falling of dust of snow from hemlock tree is bad omen, okay, but the poet took it in a positive way. He found himself relieved from sorrow after this incident. Now he could use his entire day in a fruitful way. That's what you have to talk about. Can we write that crow is a symbol of doom and is often associated with looming murder? No, but don't use such negative words, okay? We are not going to talk about this. You have to use the words which are not like too dark, okay, in meaning. You have to just use the words such as like it represents the ill luck, the bad luck. It's an unconventional mode to be used by any writer in any book to bring the positive effect. So don't go into the dark words, all right? Just stick to some sort of like negative words in order to talk about the representative symbol of crow. Okay, Hardik, I hope that is clear. All right, here we go. Hmm. ओके टॉपर बॉय, आई गॉट दैट टू। ओके, ठीक है, आप कर रहे हो तो नोट्स बना लो। नोट्स से आपको आपको खुद को हेल्प होती है। इवन व्हेन आई टीच यू ऑल, आई ऑलवेज सजेस्ट दिस टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज ट्राई टू मेक नोट्स, बिकॉज once you're making notes are for your self study, that's your way of understanding something. So when you will read that note again later on, आपको immediately click करेगा कि अच्छा इससे इससे related मैम ने ये point बताया था। So that is for your own understanding, like you noting down the things, okay, so that you can brush it up later on. ठीक है? Next question. What is a dust of snow? What does the poet say has changed his mood? How has the poet's mood changed? So a dust of snow means the fine particles of snow. This dust of snow changed the poet's mind. The poet's mood changed from that of dismay to joy. He was holding the day in regret when this dust of snow fell on him, and this simple little thing brought him some joy. That's what you need to remember. Yeah, quite a straightforward answer. Nothing like exaggerative manner is being needed. Keep it like to the point and brief. You're good to go. You'll be getting the good marks in that particular sense. Now, what does fire and ice stand for, and what is the journal opinion regarding the world? So fire stands for fury, desire, lust, anger, avarice, cruelty, greed. Learn it for your good. It will be very, very helpful for writing the answers in your examination. If something indirect comes in your examination, at least you would know, no, like this represents this or this represents this. So you can go with the right kind of understanding. Ice is symbolic of what? Ice is symbolic of hatred, it's symbolic of coldness, rigidity, insensitivity, and intolerance. So the general opinion regarding the world is that the world will end in fire and some say in ice. Both the reasons contrast. दोनों reasons opposite हैं एक दूसरे के, and one is equally opposite to each other. People who favor fire believe that it will be the heat and passion,
which will end the world. On the other side, some people think that it will be the ice which will freeze the world. That means it will be the hatred. Okay, because hatred makes your heart numb. It doesn't let you feel something. All right, that is what we are here going to talk about. Good. Okay, so we are done with the questions for the day, everybody, and we have got amazing offers. CBSE class 6 to 12 special price offer is going on. You all can get 45% off on your CBSE class 6 to 12 subscriptions by using my code PSH10. So use it right away because you'll be getting unlimited access to live and recorded classes. Structured batches and courses would be there. In class doubt solving by top educators, live tests and quizzes would be there. Limited period offer is starting from November 22, 12 a.m. onwards. PSH10 is the code. Terms and conditions applied as available on the platform. Okay. So guys, you see in plus, for example, if you go for 6 months, right now you'll have to pay like the current price that was there before this offer was 15,199. Okay, what you're gonna pay is 8,549 and what you're gonna save is 6,650. So this is 44% of the savings, which is like PSH10 code you will have to apply and you're gonna get that. Similarly, for Iconic, if you're gonna go for 18 months, let's say, so the price is 46,288 and what you're gonna pay is 31,049 rupees. What you're gonna save is 15,239, which is like 33% of the savings. So subscribe right away by using my code PSH10. It's a limited period offer already. It has been started right from yesterday. Go ahead with it. Don't waste your time. Discuss about this with whomsoever you want to discuss this about and make a move with it. All right. Is that clear to everyone? Now, we have compete everybody, battle and know where you stand. You can play one-to-one live questions battles to improve your rating because that is very nice. Live on the Unacademy Android app. Thank you everybody. I really hope that you all love the session. Do not forget to like it and share it with all your friends. And do not forget to subscribe the channel. If you're new and watching it for the first time, then kindly subscribe the channel. Thank you everybody. We'll be meeting soon tomorrow. Take care. Bye-bye.